HPV इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करती है। अभी HPV इन्फेक्शन अगर सपोज 1 लाख वुमेन को हुआ तो उसमें से कितने वुमेन को सर्वाइकल कैंसर होगा? तो ये कैलकुलेट किया गया, लोगों ने कैलकुलेट किया कि HPV इन्फेक्शन अगर 1 लाख वुमेन को हुआ तो 7 को कैंसर सर्विक्स होने का चांस है, 7 1 लाख में से। अब हम वैक्सीनेट करेंगे, 1 लाख को वैक्सीनेट करेंगे 7 में प्रिवेंट करने के लिए। उसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि HPV मल्टीपल सब टाइप्स का होता है विच कॉजेज दिस। तो वैक्सीन इज अगेंस्ट आइदर 2, एक सर्वरिक्स आती है विच इज अगेंस्ट ओनली 2 सब टाइप्स, एक गार्डासिल आती है विच इज अगेंस्ट 4 सब टाइप्स ऑफ HPV. Now this cancer can be caused by multiple subtypes, so it is not covering the entire HPV spectrum. It is covering only a subset of HPV viruses which cause cancer. Second, आज तक उन स्टडीज़ का आउटकम ये डिफाइन नहीं हो पाया है कि HPV वैक्सीन से ये फाइनल आउटकम कम हुआ कि नहीं, कैंसर कम हुआ कि नहीं। उन सारी स्टडीज़ ने बताया कि ये नॉर्मल से ये वाला जो लीजन है, जो इनिशियल लीजन होता है, ये कम हुआ है। आप रिकमेंड करते हैं किसी को? आई डोंट रिकमेंड। सर ये तो फिर इसके लिए कोई तो सिंबल होगा, कोई प्रायर लक्षण पता लगेगा, तो वो क्या है? देखिए लक्षण मैं वही बता रहा हूँ आपको, लक्षण पता लग गया तो आप डॉक्टर के पास वैसे भी जाओगे। जब लक्षण ही CA सर्विक्स हो गया, कैंसर सर्विक्स हो गया, तो आप मतलब थ्रू वजाइना यू कैन हैव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ब्लीडिंग हो सकता है, बट दैट इज अगेन वो लेट हो गया, सिम्टम आ गया मतलब लेट हो गया। हमें सिम्टम आने से पहले पकड़ना है, ठीक है। एंड हाउ इज इट डन? बाय व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैप स्मीयर टेस्ट or cervical smear test. Very simple OPD procedure. We use a speculum and we visualize the cervix. We use a spatula. हम एक जैसे आइसक्रीम की स्टिक होती है उसकी तरह ही वुडन स्पैचुला होता है, स्पैचुला बोलते हैं, जो स्पेशली डिजाइन होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सर्विक्स का। So what we do is we rotate it at the cervix and we pick up cells. वहाँ से हम वो सेल पिक कर लेते हैं एंड वी ट्रांसफर दो सेल्स टू अ स्लाइड। उसमें कुछ केमिकल लगाते हैं, स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं एंड वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज अर्लियर एबनॉर्मलिटीज। लो ग्रेड एबनॉर्मल प्री कैंसरस सेल्स दिख जाएं या हाई ग्रेड प्री कैंसरस सेल्स दिख जाएं, और उसके अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना। तो अगर मैं पैप स्मीयर की बात करूँ तो अराउंड 7% ऑफ normal people have some abnormality, but that does not diagnose them cancer. They will further be investigated, maybe a repeat pap smear after 3 months if it is a low grade abnormality. If it is a high grade abnormality then we will have to I mean वो फिर ट्रीटमेंट वाले पार्ट में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डायग्नोस करते। So in the next slide I am coming to the recommendations, when to start, how frequently to be done and when to stop. So what has been the benefit of doing this screening? 70% reduction in cervical cancer death, 70%। किसी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी से इतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना स्क्रीनिंग से हुआ है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया इज द सेकेंड किलर अमंग वुमेन व्हेन इट कम्स टू कैंसर। In developed world it is 14. वहाँ पे as a public program, public screening programs चलते हैं which all women get screened for breast cancer, cervical cancer. वहाँ पे 14th है सारे cancers की लिस्ट में, which is way down the list. Survival कितना है? 92% developed world में, और इंडिया में मैंने दिखाया था 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। So coming to the screening recommendations, so generally screening is started at 21 years of age and continue till 65 years of age. As a blanket statement, 21 to 65, and pap smear needs to be done once in 3 years if it is normal. 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करना है, उससे ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो स्लो प्रोग्रेसिव है, वो कई साल लगाएगा। तो हम 3 साल का फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं कि हम पिक कर लेंगे अर्ली एबनॉर्मल। However, to complete this recommendation, I would mention that we can increase the frequency to 5 years if we are also testing for HPV virus.
तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए भी सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, जो हमने सेल्स इकट्ठे किए थे उन सेल्स पे हम उन सेल्स के अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन टेस्ट कर सकते हैं. In that only one comes to know HPV. Yes. One test only. One test. So one sitting, but we'll be collecting those cells by a slightly different method, and we'll be subjecting that to a different method in order to identify HPV. तो PCR टेस्ट होता है, थोड़ा और एडवांस टेस्ट होता है पता करने के लिए कि HPV इन्फेक्शन उस समय है कि नहीं. अगर है तो then we can, I mean, if we are doing that HPV testing, we can increase the frequency to 5 years. Coming to next common No screening for 65 years older than. beyond 65, yeah. So it is I mean, it is again a recommendation. If the lady is fit to receive any form of therapy, after that maybe we can continue that, but whatever studies have been done, they have been limited to 65. तो अगर हम scientifically बात करें, recommendation is still 65. और 65 से अगर किसी का को normal आ रहा है तो it is unlikely कि she will develop CA cervix later on. इतना लंबा latent period है उनका development. So, are you suggesting this HPV virus is the only cause of cervical cancer? Yes, it is. Is the only cause or the major cause? It is associated with nearly 100% of cervical cancers, nearly 100%. And I mean, there are other viruses, for example HIV. So HIV predispose करता है cervix cancer होने के लिए, पर जो positive है वो तो HPV infection है. Coming to next topic, colon cancer. Colon cancer, colon, by colon I mean large intestine. Large intestine cancer is also a common cancer in India with nearly with nearly 70,000 cases diagnosed each year, and out of which around 47-46,000 patients die. Now coming to our basic question, is screening feasible for such a common cancer? Well, I would say yes. Just like breast cancer and cervical cancer, in colon cancer also there is a gradual stepwise progression from normal state to cancerous state. So it progresses through multiple steps, and one of the most commonly screened for lesion is called as adenoma. So adenoma is a benign lesion. के एक cells grow कर जाते हैं abnormal cells, but they are not cancerous cells. They are precancerous. Or they might not be precancerous, but there is an abnormality which we can identify early. कितना टाइम लगता है नॉर्मल से कार्सिनोमा होने में? Approximately 7 to 12 years. So again, colon cancer also gives us a long, I mean, wide window of opportunity to intervene and pick up such early lesions. And even if cancer has developed, there are good chances we'll be able to pick it up at a early stage, stage 1, stage 2, just like cervix. So again, in colon cancer we have two benefits of screening. One, picking up precancerous lesion and preventing cancer from developing. Precancerous पकड़ लिया, कैंसर होने से पहले ही उसको ठीक कर दिया, कैंसर हुआ नहीं, एक बेनिफिट है. सेकेंड बेनिफिट, कैंसर हो गया है पर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया और ट्रीटमेंट कर दिया. दोनों बेनिफिट्स हैं स्क्रीनिंग के. एंड इससे सर्वाइवल पे क्या फर्क पड़ा है? सो बाय लोकल आई मीन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 डिजीज, बाय रीजनल आई मीन स्टेज 3 डिजीज, एंड देन दिस इज स्टेज 4 डिजीज, कोलोन कैंसर. अगर पहली दूसरी स्टेज में पता चल जाता है कोलोन कैंसर, सर्वाइवल इज क्लोज टू 90%. जब सपोज प्री कैंसर स्टेज से आगे निकल गया, कैंसर हो भी गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में स्टिल 90% सर्वाइवल. 3 और 3 के बाद फिर आउटकम अच्छा नहीं. So various methods have been employed for screening. I'll not go into the detail. I'll just mention the screening recommendation. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So average risk, मतलब जो common people who don't have a high risk family history or who don't have mutations running in their family, they should start screening for colon cancer at the age of 50 years. Method recommended is colonoscopy. Colonoscopy एंडोस्कोपी की तरह होता है, जो जिससे हम कोलोन को विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, once every 10 years, 10 साल में एक बार करना है.
यही रिकमेंडेशन है हमारे पास. हमने देखा 7 to 12 years का विंडो पीरियड है in which we can pick up early lesions. So the recommended interval for colonoscopy is once in 10 years. उसके अलावा एक और टेस्ट है जो हम मोर कॉमनली रूटीनली करते हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग. हम देख लेते हैं फीसिस में कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, पर ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है. कुछ भी इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा तो भी ब्लड आ जाएगा, बट स्टिल बिकॉज इट इज रिकमेंडेड आई हैव मेंशन्ड हियर एंड दिस नीड्स टू बी डन एवरी ईयर. हाउएवर आई वुड प्रेफर colonoscopy over fecal occult blood testing and colonoscopy to be done once in 10 years. जो हाई रिस्क केसेस हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जिनके फैमिली में जीन म्यूटेशंस रनिंग, उनमें आई वुड रिकमेंड देम टू गो टू अ कैंसर जेनेटिक स्पेशलिस्ट. वी हैव वन कैंसर जेनेटिक स्पेशलिस्ट इन मैक्स, डॉक्टर अमित वर्मा. So he will assess the risk, just like in breast cancer, he will assess the risk in colon cancer also, and he will formulate that this much is the risk and the screening frequency needs to be this. Sigmoidoscopy is basically visualizing the last few centimeters of your colon. So सिग्मॉइड कोलॉन होता है, रेक्टम होता है, एनल कैनाल. तो जो लास्ट का अराउंड 1 feet है वो हम विजुलाइज करते हैं. सो विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एवरी 5 years. People have used it, but again the drawback is we are not visualizing the entire colon. So nearly I would say 60% of the colon is still not visualized if we do sigmoidoscopy. But yeah, people have done that. It is recommended. If somebody is not willing for the entire visualization of colon, which is unlikely. I mean, the procedure is same, sigmoidoscopy, colonoscopy, but it is a slightly easier procedure. And that's it. No, colonoscopy is done through the anus. So there is a flexible tube with a fiber optic tube and a camera attached at the end. So it is passed through the anus, and the picture comes on the screen, and we visualize if there is any abnormality. There are other methods also, but there are no formal recommendations, so I will not mention those. The other most common cancer in India is oral cavity cancer. Now this is not a cause for concern in the Western world. This is our country's cancer. Why? Because tobacco chewing, tobacco, pan masala, gutka, everything. All these promotes oral cavity cancer, and India is the capital for oral cavity cancer. Non-smokers? Non-smokers, no tobacco, no. So very unlikely to develop oral cavity cancer. तो ये bubble gum वगैरह etc. does it? Bubble gum does not cause. I mean, nobody has evaluated that, but it does not cause oral cavity cancer. Bubble gum. It is not dangerous. It is not dangerous. So teeth which are not placed properly, which causes So basically any form of chronic irritation in the oral mucosa, जो मुंह के अंदर की स्किन है उसमें किसी भी फॉर्म में क्रॉनिक इरिटेशन होगी, लंबे टाइम तक, महीनों सालों तक इरिटेशन चलेगी, तो वहाँ पे कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है. सो इम्पैक्टेड टीथ हैं, वो बार बार इरिटेशन कर रहे हैं, अल्सर कर रहे हैं, दैट कैन लीड टू कैंसर. और ये तो प्रिवेंटेबल कॉज है, टोबैको जो लोग खाते हैं. तो नियरली 80,000 people develop oral cavity cancer, and out of which more than 50,000 die. And many cancers of oral cavity have a precancerous stage which we can diagnose. Now since this site is so accessible, the recommended method for screening is just inspection and palpation, so clinical examination. It does not require any test. Doctor will examine through a torchlight and will palpate for any abnormality. There are no formal recommendations, but I would suggest that patients who are high risk, those who have been consuming this for quite a long time, they must
be screened by a healthcare professional at least a year, at least yearly. Coming to lung cancer, so I'll just run through my slides and finish off because it's almost 12:15 now. So lung cancer, again a common cancer, a preventable cancer. Nearly 80% of lung cancers today are attributed to smoking. 80%. So 80% cases can be prevented. And what is the outcome? One of the worst cancers to have. 70,000 people develop lung cancer a year and more than 60,000 die of it. One of the most dreaded cancers. So Why? Why many ladies also get lung cancer? Ladies also. Why they don't smoke generally? No, They- see, even men also get cancer who don't smoke. Yes. So it's not that ladies alone will get cancer. So 20% of lung cancers will develop in non-smokers. More in. But 80% of lung cancer. Passive smoking is one of the most important reasons. But then again, it will come under passive smoking. Those who have not been exposed to any risk factor, they also develop lung cancer. तो ऐसा नहीं है, पर चांसेस इतने ज़्यादा हैं स्मोकिंग के साथ और स्मोकिंग हैज बीन एट्रीब्यूटेड, मतलब उसके साथ लिंक मिल गया हमें. ऐसा नहीं है कि बाई चांस स्मोक कर रहे थे और बाई चांस लंग कैंसर हो गया, ऐसा नहीं हुआ. 80% of lung cancers are attributed to smoking. So rest 20% have other exposures, industrial exposures and everything. So वो एक important चीज़ है जो preventable. What about brain cancer? Brain cancer. Brain cancer, I mean the incidence is very low, and we don't have any screening strategies for brain cancer. So brain cancers are mostly diagnosed once the patient is symptomatic person. The incidence is very, very low. So I would say that it's a problem, but it's not a major public health problem. What would be the survival rate of the brain cancer? So that depends upon the type of cancer. So brain cancers are. What is the reason of brain tumor? What is the reason of brain tumor? Brain tumor reason. I mean, see, brain tumors, there are two types of brain tumors. One is those which develop within the brain, from the brain tissue. No, they are not benign. They can be benign, they can be malignant. Okay. Then the other type of brain tumor is a tumor which has spread from some other part and gone into the brain Due to malignancy. due to other malignancy. For example, lung cancer going into brain and producing a tumor there. So that will be called as metastasis. So the cause, what you are asking is, it can go from some other place or it can develop there also. Could be diagnosed only through biopsy or? Which one? Brain cancer? So the imaging modalities presently available, including MRI and MR spectroscopy, can guide you that what is it, what type, subtype it is. But definitive diagnosis is only established by biopsy. Should we place it age 75 and the value of actually goes down? पहचानना बंद कर दिया है. Should we subject To biopsy? Well, see, again, I mean, we are deviating from our current topic, screening. Okay? So we are going into the realms of diagnostics and treatment. So we'll discuss that after I finish off with this session. Okay? So, can we diagnose lung cancer? Can we screen for lung cancer? Well, I would say that it is not the ideal cancer to be screened. Why? Because it is relatively more aggressive. बहुत aggressive होता है, जल्दी spread करता है. 80% cases are diagnosed in advanced stages. Not the best cancers to screen. Early stages बहुत कम पकड़ में आती हैं. Pre-cancerous stage बहुत कम पकड़ में आती हैं. However, जब हमें पता है कि 80% cases smoking से related हैं, तो we can identify a population who are at a high risk. हम पता लगा सकते हैं कि एक ये पॉपुलेशन है जिसमें लंग कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, बहुत लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटेट करते हैं इन पैक ईयर्स. मोर देन 20 पैक ईयर्स, मतलब एक पैकेट 20 साल अगर कोई स्मोक करे सिगरेट का, तो उसको बोलते हैं 20 पैक ईयर्स. अगर 2 पैकेट 10 साल स्मोक करे
2 into 10 वो भी 20 पैक ईयर्स हो जाएगा. 5 पैकेट्स अगर 4 साल स्मोक करे तो भी 20 पैक ईयर हिस्ट्री हो जाएगी. अगर 20 पैक ईयर से ज़्यादा स्मोक किया है तो then that person is at a very high risk of developing lung cancer. And that is the person who should be screened for lung cancer. उसी पे ही स्टडीज़ हुई हैं और उन्हीं में ही दिखाया गया है कि अगर ऐसे लोगों को हम स्क्रीन करें जिनकी इतनी हाई स्मोकिंग हिस्ट्री रही है तो उनको स्क्रीन करने से 20% तक कैंसर डेथ कम हो जाता है लंग कैंसर में. सो इट इज़ नॉट फॉर जनरल पब्लिक, इट इज़ ओनली फॉर हाई रिस्क cases, high risk people. And how do we screen them? We can screen them by using a chest X-ray or CT scan. Now CT scan has been consistently shown to be much more effective screening method than chest X-ray. So X-ray does not help in screening. Now the concern what he also raised is exposure to radiation because of CT scan. So for lung cancer screening, what we have